चलो गाइस, हम लेके आए एक प्रोग्राम जो काफ़ी बार इंटरव्यू में पूछा जाता है। सिंपल है प्रोग्राम, बट वो इंटरव्यू क्या करता है, कुछ कंडीशन देता है। तो कंडीशन वही रहती है कि आपको एक लिस्ट दिया जाता है। जैसे यहाँ मैंने एक लिस्ट ली है कि अरे एज लिस्ट 12, 34, 21, 4, 6, 5 और 33 और कुछ नंबर और ऐड कर लेता जो इवन और ऑड हो। 75, then 32, then 67। सो क्या होता है, आपको एक लिस्ट दी जाती है, उसमें से आपको इवन एंड ऑड नंबर फाइंड आउट करना होता है। और उसमें और एक कंडीशन आती है इंटरव्यूअर की कि वो क्या बोलता है, सिर्फ पार्टीशन बाय का यूज़ करके मुझे वो इवन और ऑड दोनों लिस्ट चाहिए। तो चलिए भाई, हम चालू करते स्टार्ट कर देते हैं प्रोग्राम। Here we, here we declare a class like public, define a we define a public class even and odd partition by, and simple we create some list of method and declare main method. Then just we creating one list of integer using rs dot as a list, and we contain the number from different number. So number look like this. You can see on this portal. So we are about to use partition by, which split the collections and into two groups based on the conditions. Predicate function inside your functional interface. We just take that the uh, single input and provide a boolean result. So according that we take this. First of all we get number. Sorry for the, we can check. First of all we take map. We import map from the boolean package and provide some boolean, and here we can also again import list for our numbers list. Then we all numbers are present inside this array dot as a list inside all are integer, so we take integer. Then we just taken our method reference object reference here, partitions, p-a-r-t-i, partition by. Then which are we just taken where list integer number array dot as list, just we take a num dot stream. Here we stream, then we have to collect all the number inside the collect, and inside the collect we have one operator collectors. Inside the collectors we take grouping by or partition by. Just we take a partition by. Here we provide some condition like for your numbers. So m models of 2 equal to 0. This is the base condition, friends. We can easily find the, sorry for that, okay, this is a base condition. So you should remember this one method. So find out the even and odd number from the given list using partition by. Just we have to take on the printing statement sop sys out, and here I just print even number from the given list. Okay, list. And then we have to check whether partition dot get to get a true. See, there is one predicate functional interface present inside the functional interface, which is predicate function give take a in argument and return boolean result. So according that, first of all we take true for the even number, and then we check odd number, system dot odd number
from the given list person dot get false। सो गाइस जस्ट चलो रन करके देखते हैं प्रोग्राम अपना आउटपुट क्या देता है। सी गाइस, जो भी इवन नंबर फ्रॉम द लिस्ट ऑफ 12 34 4 6 4 5 9 8 3 2 और जो भी ऑड नंबर था अपने लिस्ट में से 21 33 75 67 ऑल आर गिवन इनसाइड द लिस्ट। दिस इज अ प्रोग्राम गाइस। इंटरव्यू आस्क यू, मैं मोस्ट ऑफ द मुझे भी इंटरव्यू ने पूछा था, 2-3 इंटरव्यू में, यूआई में, डीलाइट में और पीडब्ल्यूसी में और कैपजेमिनी में। सो आपको सिर्फ पार्टीशन बाय का यूज करके इवन एंड ऑड नंबर फाइंड आउट करने के लिए सीआई से डोंट यूज। सपोज इफ इंटरव्यू आस्क यू राइट अ प्रोग्राम फाइंड आउट इवन एंड ऑड नंबर बाय पार्टीशन बाय। जावा एट का मतलब क्या है? जावा एट का मतलब है कम से कम कोड और जो आउटपुट चाहिए वही आउटपुट, इसलिए वो ऐसे प्रोग्राम देते हैं। चलो गाइस, लाइक करो, सब्सक्राइब करो और यूट्यूब चैनल। ऐसे ही मैं मोर यूट्यूब की मोर प्रोग्रामिंग कोडिंग क्वेश्चन लाऊंगा आपके लिए। थैंक यू, बाय, शेयर।